Jai friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and safe. So how are you? So today's topic is very important for you. Don't skip this video and watch till end. Okay. Today's topic is FMEA. It's called Failure Mode Effective Analysis. We are doing in manufacturing areas, manufacturing process, our design, assembly, and product and services. We are doing the FMEA. It's called pfma also, Dfmea also, and if you belong from manufacturing process, then we will do pfma. Okay, process failure mode effective analysis. So we will go for the deeply knowledge of FMEA. If you watch this video, then you can do FMEA in initial stage. If you are fresher, if you are a little bit experienced, then you can do it by yourself. Okay, because we are going to learn about definition of FMEA, when we will use the FMEA, when we can use, and main thing is that procedure of FMEA. Okay, I will let you know what is the procedure, how can we do the FMEA in our processes. Okay, to identify the failure modes. Okay, main thing is that FMEA is very important. 3 points is there: severity, occurrence, and detection. Okay, we can find out the number, risk priority number, and then we will calculate the risk priority number. We will also see what is the acceptance criteria of RPN number. Okay, so you should continue this video, and if you are new here, please subscribe my channel. Already have done, please share with your friend also. Okay, so without wasting the time, let's go on the screen. So friends, we came on screen and now we are going to study to our session FMEA. Okay, failure mode effective analysis. Now without wasting the time, we are going to start topic. Okay, first we will know about what is the definition of failure mode effective analysis. So failure mode effective analysis is a step-by-step approach for identify all possible failures. Okay, note down all possible failure in a design, manufacture or assembly process or a product or services. It is a common process analysis tool. If anyone asks for the any question for FMEA, you can directly answer. We have find out the possible failures in our design, manufacturing or assembly process or product and services also. This is a process analysis tool. Here are 2 points there. First is failure mode and second thing is effects analysis. Okay. So what is the meaning of failure modes? Failure modes means the way or mode in which something might be fail. Failure are any error or defects, especially one on that fact the customer uh, and can be potential or actual. So we are find out the failure or any it can be error or it can be effects or defects also. Okay, effect analysis means refer to studying the consequences of those failures. This is the effect analysis. So you can understand what is the definition of failure mode effective analysis. When we need to use FMEA, when we need to use it, here some points are there. When we need to do FMEA, when a process, product, or services is being designed or redesigned after quality function development, when an existing process, product, or services is being applied in a new way before developing control plans for a new or modified processes, when improvement goals are planned for an existing process, product or services, when analyzing failure of any of an existing process, product or services periodically throughout the life of process, product or services. These are the main points. Then we need to use FME. Okay. Next, FMEA procedure. This is the main points of FMEA, and you can say this is the main point of this session. Okay, so we have a number of 15 steps we can do the FMEA process. So I will share the FMEA format also, and we will go for step by step how to do FMEA. Okay. First, assemble a cross-functional team people with diverse knowledge about the process, product or services and customer needs. Function after include our design, manufacturing, quality, testing, reliability, maintenance,
purchasing, supplier, sales, marketing, and customer service. Here I will use Hindi language because or some subscriber is difficult to understand Hindi language. That's why I am going to use for the FME process in हिंदी लैंग्वेज ओके सो फर्स्ट आपको क्या करना है असेंबल एक क्रॉस फंक्शनल टीम एक सीएफटी टीम आपको बनाना है जिसके जो टीम मेंबर होगा उसके पास प्रोसेस की नॉलेज होना चाहिए उसको प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए जैसे अगर आप प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो तो आपका जो सीएफटी टीम होगा उसमें प्रोडक्शन का मेंबर होगा क्वालिटी मेंबर होगा मेंटेनेंस परचेजिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ये सारे पर्सन होंगे और तब जाके एक सीएफटी टीम बनेगी जिसको अपने प्रोसेस की नॉलेज होगी ठीक है सेकंड आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एफएमईए इज फॉर कॉन्सेप्ट सिस्टम डिजाइन प्रोसेस और सर्विसेज व्हाट आर द बाउंड्रीज हाउ डिटेल्स शुड बी यूज फ्लो चार्ट ठीक है इसमें क्या करना है आपको एफएमईए का स्कोप फाइंड आउट करना है व्हाट आर द बाउंड्रीज वो मेन थिंग है ओके एंड इसको यूज आपको फाइंड आउट करने के लिए आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं थर्ड इज fill the identification information at the top of your FMEA form. The remaining steps ask for information that will go to the column of the form. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ योर स्कोप आपको अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका स्कोप फंक्शंस आइडेंटिफाई करना है एंड डिजाइन व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम डिजाइन प्रोसेस एंड सर्विसेज व्हाट डू आवर कस्टमर एक्सपेक्ट इट to do name it with a verb followed by a noun usually one will break the scope into separate subsystem items, part, assembly or process. Next, for each function identify all failure. एवरी फंक्शन के लिए आपको जो पॉसिबल आइडेंटिफाई फेल्योर जो है जो क्या क्या आपका फेल्योर हो सकता है उसको आपको लिस्ट आउट आइडेंटिफाई करना है these are potential failure mode if necessary go back and rewrite the function with details to be sure the failure mode show a loss of the function for each failure mode, identify all the consequences of the system, related system process, related process. What does the customer experience because of the failure? What is happen when the when this failure occurs? Okay. Next and seventh, determine how serious the is effect. It's called severity. We can denote is S. Okay. So S is severity, seriousness of the problem और प्रॉब्लम इज कितनी प्रॉब्लम सीरियस है उसको हम 1 से 10 तक रेटिंग देंगे रेटिंग मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा तो सेवरिटी आपको जो सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम है वो रेटिंग देना है ठीक है नेक्स्ट फॉर ईच फेल्योर मोड डिटरमाइन ऑल पोटेंशियल रूट कॉज आपको आइडेंटिफाई करना है जो ईच पॉसिबल फेल्योर्स हैं यूज काज एंड इफेक्ट डायग्राम आप यूज कर सकते हैं आपको पॉसिबल कॉजेस आइडेंटिफाई करने के लिए लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉज फॉर ईच फेल्योर मोड इफेक्टिव एनालिसिस फॉर्म नेक्स्ट जो है फॉर इस काजे डिटरमाइन द ऑकुरेंस रेटिंग जैसे मैंने बताया सेवरिटी है सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑकुरेंस जो है ऑकुरेंस लेवल हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इसमें भी हम 1 to 10 रेटिंग देते हैं जिससे कि हमें पता चलता है ऑकुरेंस लेवल क्या है ठीक है नेक्स्ट है फॉर ईच काज आइडेंटिफाई current process control these are test procedure for mechanism that you need you know how a place to keep failure from reaching the customer these control might prevent the cause from happening reduce the likelihood that it will happen defect failure after the cause has already happened but before the customer is affected नेक्स्ट इज फॉर इज द डिटेक्शन लेवल आइडेंटिफाई करेंगे जैसे कि सेवरिटी ऑकरेंस हो गया डिटेक्शन को हम डी से डिनोट करते हैं एंड इसका भी रेटिंग हम 1 to 10 देंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में बताऊंगा ठीक है यहाँ पे आप वीडियो को पास करके एक बार इसको अच्छे से रीड करें मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो ठीक है सो यू शुड pause the video and read carefully and understand okay here very clearly I have mentioned here 15 steps are there you can do the FMEA in your process okay next is optional for most industries you can ignore this one and 13 is if you have find out severity rating occurrence rating and detection rating then you can calculate the RPN number is priority number okay
Risk priority number you can calculate, and risk priority number is equal to severity in multiply of occurrence multiply of detection. Okay, किसी किसी जगह पे सेवरिटी इंटू ऑकरेंस का ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आरपीएन आ जाता है, बट आपने क्या करना है, तीनों का ही मल्टीप्लाई करके आरपीएन नंबर कैलकुलेट करना है। उसकी लिमिट बताऊंगा मैं आपको कि उससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेड प्रोसेस होगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई रिकमेंडेड एक्शन। अगर एक्शन रिक्वायर्ड है, पिन नंबर आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद अगर वो हमारी लिमिट से ज़्यादा है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेने के बाद फिर अगेन हम एक्शन आर कंप्लीटेड नोट रिजल्ट एंड डेट एफएमईए फॉर्म आल्सो न्यू एसओडी रेटिंग न्यू आरपीएन, ठीक है। एक्शन ले लिया आपने, फिर अगेन हम एस सेवरिटी ऑपरेंट डिटेक्शन लेवल फिर हम रेटिंग देंगे, फिर आरपीएन नंबर कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा विद इन लिमिट में होना चाहिए। ये एक फॉर्म मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाया है, आपको चाहिए होगा तो मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आई विल शेयर द एक्सेल फॉर्मेट टू यू फॉर योर इजी, ओके। So here function is there, and this is the potential failure. This is the effect of failure. This is the severity number. Here mention is 8, and potential cause is cut off the cash. Here example is account department, and the function is dispense or amount of cash requested by customer. Okay, तो potential failure effect क्या है? Customer does not appear dispense case, कस्टमर वेरी डिस्पर्स, ये इफेक्ट होगा। डिस्पेंस डिससेटिस्फाइड एंड सेवेरिटी जो नंबर हमने 8 दिया है यहाँ पे 8, एंड जो पोटेंशियल कॉज ऑफ फेल्यूर आउट ऑफ कैश, तो ऑक्यूरेंस लेवल आ गया 5, एंड करंट प्रोसेस कंट्रोल क्या होगा, इनिशियल लो कैश अलर्ट, ओके। तो डिटेक्शन लेवल 5, तो जो हम आरपीएन निकालेंगे तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5 तो ये 200 आएगा, ठीक है। सो फिर अगर ये हमारे लिमिट में है तो हम यहाँ पे हमें ये सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिमिट में नहीं है तो हमें अगेन यहाँ पे एक्शन प्लान लेना है, रिकमेंडेड एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट डेट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, एंड देन यहाँ पे एक्शन लेना है हमको। फिर उसके बाद हमें अगेन सेवरिटी, ऑक्यूरेंस, डिटेक्शन तीनों का रेटिंग दे के फिर आरपीएन नंबर निकाल के फिर हमें ये चैप्टर क्लोज करना है, मीन्स ये हमारा सीट कंप्लीट होगा, ओके। एफएमईए एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप एक बार रीड करें इसको। वैसे मैंने आपको प्रीवियस सीट में अच्छे से समझा दिया है, इसको आप रीड करें और समझें। सेवरिटी का मैं टेबल यहाँ डाल दिया है, आप देख सकते हैं सेवरिटी में फल एक दो मैं लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। वैसे पहले मैंने बताया ना सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, तो अगर रेटिंग 10 कब देंगे, जब डेंजरसली हाई मीन्स फेल्यूर कुड इंजर द कस्टमर और एन एम्प्लॉय। जो फेल्यूर होने वाला है वो कस्टमर के एंड पे या हमारे एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, लेबर्स हैं, उनको इंजर्ड कर सकता है, ऐसा हमारा फेल्यूर है, तो हम उसको रेटिंग 10 देंगे। एक्सट्रीमली हाई है मीन्स फेल्यूर मोड क्रिएट नॉन कंप्लायंस विद फील्ड रेगुलेशंस, तो 9 देंगे। ऐसे नीचे से अगर लो में जाएंगे तो नन है तो मीन्स उसका कोई इफेक्ट नहीं है तो 1 देंगे, वेरी माइनर है तो उसको 2 देंगे, ठीक है। इसको रीड करो आप 1 to 10, उसका डिफिनीशन पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पढ़ें और उसका मीनिंग समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, बट आपको यहाँ पॉज करके वीडियो अच्छे से इसको पढ़ना है। यू शुड रीड केयरफुल्ली। Severity, occurrence and detection slide is very important for you during RPN number calculation, during rating of the severity, occurrence and detection. Same here, occurrence is there. This is the criteria, this is the rating, and this is the probability of failure. तो यहाँ भी आप देखें वेरी हाई, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिजाइन, 100 per thousand, greater than 100 per thousand pieces, then we can do the rating 10, and very low means failure is eliminated through preventive control, then is very low, okay. This is the occurrence rating. Detection rating you can see absolutely uncertainly, then means इसका definition क्या है, the product is not inspected or the defect caused by failure is not detectable, then अगर detectable नहीं है तो 10,
अगर इजीली डिटेक्ट हो जा रहा है तो उसका तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्टेन मीन्स 1 देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे अच्छे से देखना है सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन की सीट, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आपके एवरी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। यहाँ रिस्क एक स्लाइड बनाया मैंने, रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो कि होता है सेवरिटी इंटू ऑकरेंस इंटू डिटेक्शन इज इक्वल टू आरपीएन नंबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरपीएन नंबर एंड दिस इज द, मैंने कंपेयर करके एक सीट बना दिया जिससे आपको पता चले। नियरली इम्पॉसिबल, ये कम की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है हाई की तरफ, ऐसे सेवरिटी में भी है, ऐसे डिटेक्टेबिलिटी भी हुई है। वैसे तो उस सीट से आपको समझ में आ जाएगा, बट यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सेप्टेंस लेवल, अगर कोई पूछता है कि आरपीएन नंबर का क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 into 49 के बीच में है तो नेग्लिजेबल, 50 टू 124 के बीच में है तो एक्सेप्टेबल, 125 टू 174 के बीच में है तो परमिसेबल। ओके, सो 175 टू 225 तो अनएक्सेप्टेबल एंड 225 एंड एबव है तो इंटॉलरेबल। तो आपको क्या करना है, ये इसके बीच में रहना है आपको, ये जो परमिसेबल है इसके बीच में आपको कोशिश करना है कि आपका प्रोसेस जो ये आरपीएन नंबर आए इसके अंदर आए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब हमारा एफएमईए अच्छा है। इसके ऊपर आता है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लस ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।